Assalamu alaikum. I'm Dr. Rahman Elmi, and today our topic is the blood pressure introduction and regulation of blood pressure. Today I will try to explain this topic both in English and Urdu language because it is very important topic for everyone. The blood pressure is actually when the blood pressure is higher than the normal values, then that condition is called as hypertension, which is the most common disease even in the whole world, in Pakistan, Asian countries, and the whole world. It is the most common disease prevailing throughout the different regions and throughout the different families. So there are different regulatory mechanisms involved to regulate the blood pressure normally, including the autonomic nervous systems, which includes two pathways, the sympathetic and parasympathetic pathways, the baroreceptors, chemoreceptors, RAAS pathway or RAAS system, Renin-Angiotensin Aldosterone system or pathway, Vasopressin hormone which is secreted from the pituitary gland. So we will discuss all these pathways and regulatory mechanisms that are involved in the blood pressure, in the regulation of blood pressure. And we will also discuss the introduction, different factors and stages of hypertension or stages of blood pressure. First of all, we are going to understand that what is blood pressure. Blood pressure is basically the force exerted by the blood flow on the arterial walls. This is a force. This is not the speed of blood flow. This is the force of blood that is exerted on the walls of blood vessels when the blood is flowing. जब blood flow कर रहा होगा उस टाइम पे जो blood vessels की walls के ऊपर जो pressure पड़ रहा होगा उस pressure को हम लोग blood pressure कहते हैं. And depending upon the nature of blood vessels, there are on basis of location we can measure the blood pressure in the arteries, that is called as arterial blood pressure. We can measure the blood pressure as veins, that is called as the venous blood pressure. We can measure the blood pressure as capillaries, which is called as capillary blood pressure. But most importantly, that on regular basis, for which we make the measurement, that is the arterial blood pressure. And the reason is because in arteries the blood pressure is high, because the blood first time from when it is secreted from the heart, the blood flows towards the arteries where the blood pressure is higher as compared to veins and capillaries. Therefore we measure mostly the blood pressure of arteries because their values can be high within seconds and can be low within seconds. जो ब्लड प्रेशर है ये हम लोग ज़्यादातर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ही मेजर करते हैं, जो कि आर्टरीज के अंदर हम लोग ब्लड प्रेशर देख रहे होते हैं और उसको हम लोग आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बेसिकली कहते हैं. जो और यहाँ पर ब्लड प्रेशर इस वजह से ज़्यादा होता है आर्टरीज के अंदर क्योंकि हार्ट से ब्लड फर्स्ट टाइम आर्टरीज के अंदर ही फ्लो करता है. तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर है दैट वी मेजर मोस्ट ऑफ द टाइम इन दी आर्टरीज में ही हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं. There are basically two types of blood pressure. First one is the systolic blood pressure. The second one is the diastolic blood pressure. Systolic blood pressure is the word comes from the systole. Systole means contraction of heart. So this is the blood pressure which is at the time of contraction of heart. ये वो pressure है जब heart contraction कर रहा होगा उस time पे जो pressure होगा that is the systolic pressure. Second one is the diastolic blood pressure. Diastolic blood pressure is basically the minimum pressure. It is the lower blood pressure when the heart diastole occurs. Therefore, it is called as diastolic blood pressure. जब heart diastole कर रहा होगा, relax कर रहा होगा, उस time पे जो pressure होगा, that will be the diastolic blood pressure. When the heart relaxes, when the heart shows contraction, or when the heart shows a systole, the pressure at that time will be as a systolic blood pressure. According to the American Society of Cardiology or Hypertension, there are different stages of hypertension or normal blood pressure values. First of all, there is the normal blood pressure. Normal blood pressure means a systolic less than 120 is normal and a diastolic less than 80 millimeter of mercury is normal. This is the normal blood pressure. Secondly, the elevated or prehypertension blood pressure, where the systolic blood pressure is between the 120 to 129. If the systolic blood pressure is between this range, so the patient falls, the individual falls in prehypertension category, and the diastolic blood pressure will be below 80 millimeter of mercury. If the patient blood pressure is higher than 130 and in a range between 130 to 139, or diastolic between 80 to 89, if the blood pressure falls in this category of any patient, so he will be in hypertension stage 1.
Now, a disease condition, the hypertension stage, starts at this phase. When the blood pressure crosses 130, between 1 to 139, that will be a stage 1. And if it crosses 140, अगर ये 440 से भी pressure increase हो जाता है और diastolic अगर 90 से increase हो जाता है, so that will be the hypertension stage 2, when the systolic blood pressure increases than 140 and diastolic blood pressure increases than 90. That case will be called as hypertension stage 2 blood pressure. And then another category is the hypertensive crisis. This falls again in two categories. One is the hypertension emergency and urgency on basis of the diastolic blood pressure. So the in case of hypertension crisis, the systolic blood pressure will be higher than 180 millimeter of mercury, and the diastolic blood pressure will be higher than 120 millimeter of mercury. This is really a severe case. ये बहुत ही एक severe case है in which the diastolic blood pressure is more high, even higher than 120 millimeter of mercury. That is approximately an alarming case for the patient. ये patient के लिए एक alarming condition है जब उनका diastolic blood pressure भी 120 से increase हो जाता है. In such cases, most of the organs may be may fail. For example, kidney failure में आकर, eye vision में loss completely, brain hemorrhage में आकर. So different disease can be caused due to hypertensive crisis. And this stage reaches when a patient do not control his blood pressure through medicines or through a non pharmacological treatment. मतलब जब वो डाइट वगैरह से अपनी मेडिसिन को, अपनी ब्लड प्रेशर को या हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना करें, तो फिर मरीज या मेडिसिन से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करें, तो फिर पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाता है. The blood, as I have told you that there are different variations in blood pressure. If we see overall in the body, in the systemic circulation and the pulmonary circulation, just make one concept that how much the blood flows away from the heart, the blood pressure falls down. As you can see here, the left ventricle has the highest amount of blood pressure, because the blood present at the left ventricle will also have a pressure. So there is in ventricle there is the highest amount of blood pressure, and after that the blood comes towards the aorta and large arterioles, small arterioles, then arterioles, and then capillaries. So how much जितना blood हार्ट से आगे जाता जाएगा आर्टरीज में, फिर इसी तरह कैपिलरीज में, उतना ही जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता जाएगा. How much the blood moves away from the heart, the blood pressure will go down. Blood pressure will be down. Therefore, we measure the blood pressure in the arteries, because the maximum pressure present of blood vessels is present in the arteries. Maximum जो blood pressure है blood vessels में वो arteries में होते हैं, इस वजह से हम लोग arteries में ही blood pressure measure करते हैं. During the regulation of blood pressure, we can have a mathematical formula. For example, blood pressure is equal to cardiac output into or multiplied by peripheral resistance, yeah, total peripheral resistance. Now, what is blood pressure that we have discussed, which is the pressure of blood exerted on the walls of the blood vessels. What is cardiac output? It is basically the amount of blood that heart pumps per minute is called the cardiac output. Heart एक मिनट में जितना ब्लड पंप करते हैं उसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है. And then the peripheral resistance or total peripheral resistance, it's basically the total amount of resistance that blood feels when it moves to the different parts of the body. के जब ब्लड वेसल्स में से मूव करती हैं पूरी बॉडी में, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस, जो रुकावटें ब्लड फील कर रही होगी, उसको हम लोग पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं. For example, the examples of so any factor that they have direct relationship. If due to any factor the cardiac output increases and the peripheral resistance increases, the blood pressure will automatically increase. And if due to any reason the cardiac output decreases and the peripheral resistance decreases, so the blood pressure will automatically decrease. They are in direct relation. Blood pressure is in direct relation with cardiac output and peripheral resistance. If, for example, heart rate increases, when the heart rate increases, so due to the heart rate, the cardiac output will increase, and due to the cardiac output, the blood pressure will increase. And if due to any reason the peripheral resistance increases, for example, the diameter of the blood vessels when decrease, the peripheral resistance will increase.
when cholesterol inside the blood increases, the peripheral resistance will increase, due to which the blood pressure will also increase. जिस वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल की वजह से या साल्ट इनटेक वगैरह की वजह से या ब्लड की विस्कोसिटी हाई होने की वजह से या ब्लड वेसल की डायमीटर कम होने की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर ब्लड प्रेशर कम होगा, उस वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होगा फिर। एंड इफ ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट है, लो ऑक्सीजन है, या ड्यू टू एनी रीजन कार्डियक आउटपुट जब कम होगा, या एज के साथ अगर हार्ट रेट वगैरह या जो भी अगर कम होगा तो उससे कार्डियक आउटपुट कम होगा, और इसी तरह से ब्लड जो है ब्लड प्रेशर फिर कम होगा। एंड द सेम द ब्लड वैल्यू, द ब्लड वॉल्यूम, when blood vessel volume will be low, so the cardiac output will be low, and when the cardiac output will be low, so the blood pressure will be low. So और इसी तरह जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, और जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ब्लड वॉल्यूम इसके ब्लड के नमकियात और जो वाटर हैं उनको हम नोट कर रहे होते हैं बेसिकली कि वो जब इंक्रीज होता है तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिससे कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, जिससे ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। These are the different mechanisms which are applied in the body naturally. They are basically for regulating the arterial blood pressure. Here some mechanisms are for the short term, some are for the intermediate period of time, and some are for the slow response, which are for the long term blood pressure control. But approximately they are work in coordination, ये सारे coordination में काम करते हैं आपस में। The most important systems are the baroreceptors reflexes, chemoreceptor reflexes, central nervous system responses, the sympathetic and parasympathetic pathways, as we have discussed in our previous lectures, the angiotensin vasoconstriction, the ADH vasoconstriction, and the aldosterone and vasopressin hormones. These are the most important mechanisms that are involved in the regulation of blood pressure. So first of all, we are going towards the autonomic nervous system stimulation. Autonomic nervous system is, there are two parts of the autonomic nervous system. One is the one is the sympathetic nervous system, and one is the parasympathetic nervous system. So this pathway, these both pathways are activated within seconds or within minutes. They are activated, so and they are mostly involved in ये ज़्यादातर जो कार्डियक आउटपुट है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इन दोनों को मॉनिटर करने में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर हो जाता है। एंड द सेंटर फॉर the blood pressure regulation is present in the medulla oblongata. Here you can see that how the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system can affect the blood pressure. For example, the sympathetic nervous system, uh, it on the heart, it increases the heart rate and increases the force of contraction or the contractility, due to which the blood pressure will be increased. And the same is the case with the arterioles and venules, the arteries and veins, where the vasoconstriction occurs at both places, due to which the blood pressure will automatically increase. Blood pressure यहाँ से increase होगा क्योंकि sympathetic nervous system की वजह से heart rate और heart की contractility increase होती है, जिससे blood pressure ज़्यादा होगा, और arterioles या arteries के अंदर vasoconstriction होगा, जिससे blood pressure ज़्यादा होगा। और and the parasympathetic nervous system, actually it decreases the heart rate. Yeah, this will decrease the heart rate, due to which the blood pressure will be डिक्रीज्ड। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को कम करते हैं क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करेगा, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करेगा क्योंकि ये हार्ट रेट ज़्यादा करते हैं, फोर्स ऑफ कंडक्शन ज़्यादा करते हैं, वेजोकंस्ट्रक्शन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक पाथवे हार्ट रेट को ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो अगर कभी भी बॉडी में इफ ड्यू टू एनी रीजन द ब्लड प्रेशर फॉल्स, तो द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी एक्टिव, so the blood pressure will be boost up. And if due to any reason the blood pressure moves up, the parasympathetic pathway will be more active, so the blood pressure will become down. So therefore these two pathways actually work in equilibrium against each other. ये equilibrium में काम करते हैं sympathetic and parasympathetic pathways. Second one is the baroreceptors. They are basically mechano-stretch receptors, and they are present in carotid sinus, which is present at the neck region, and the aortic arc. They are present in the aorta. Here they are present, and they are present at the carotid sinus or at the carotid arteries. They are present in these two slots. In those two places they are present, and they basically mirror the low blood pressure due to the stretch parameters, and through different nerves including the glossopharyngeal nerves
it moves their response towards the medulla oblongata, where the medulla oblongata will then control the blood pressure. We can better understand this from this flow chart. यहाँ पर अगर here if you see that the blood pressure, if due to any reason the arterial blood pressure falls down, so the baroreceptor present at the carotid arteries and aorta will decrease the firing of baroreceptors. इससे जो baroreceptors है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जो carotid और जो टर्न की जो फायरिंग्स है वो जो उनकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब उससे होगा क्या कि the message will move through the sensory nerves towards the brain and towards the medulla oblongata part of the brain. And then now here the blood pressure is already decreased. Blood pressure पहले से कम हुआ है, तो बॉडी ने इसको ज्यादा करना है. बॉडी हैव टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, so the sympathetic pathway will increase and the parasympathetic pathway will decrease. जो sympathetic pathway होगा वो increase होगा medulla oblongata के response के अंदर, और जो parasympathetic pathway है वो decrease होगा, क्योंकि parasympathetic blood pressure और ज्यादा कम करना था, जिसकी वजह से इसकी जो काम है वो कम हो जाएगा और इसका काम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को ज्यादा कराना है. So we have to increase the blood, yeah, or the body has to increase the sympathetic pathway to move the blood pressure or to increase the blood pressure, and decrease the parasympathetic pathway so that the blood pressure will be increased. And the mechanisms are that sympathetic pathway works through alpha and beta receptors, due to which the ventricular myocardium contraction occurs, and the smooth muscles will contract and the vasoconstriction occurs. Force of contraction will be increased, heart rate will be increased. These two parameters will increase the cardiac output, and vasoconstriction will increase the peripheral resistance, जिसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज अप. यहाँ पर अगर आप देखें जब मिडुला ऑब्लोंगेटा से मैसेज सिंपैथेटिक पाथवे की तरफ आएगा तो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के जरिए से ये डिफरेंट लोकेशंस पे काम करेगा, जिस तरह एस नोड है, मायोकार्डियल सॉरी वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल मसल्स है, आर्टेरियल या फिर जो जो आर्टरीज के स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर आके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे अल्फा रिसेप्टर के जरिए से, जहाँ पर ये विजुअल कंस्ट्रक्शन काज करेंगे, यहाँ पर फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर जो हार्ट रेट है उनको इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि इन विजुअल कंस्ट्रक्शन की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. Due to the force of conduction and heart rate increase, the cardiac output जो है that will increase, and due to these two reasons the blood pressure will automatically increase up. So this is the overall regulation of baroreceptor. Baroreceptor actually acts as a linkage pathway, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज आके ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन को सिर्फ बताते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हुआ है. Then the brain has to monitor the blood pressure through the sympathetic and parasympathetic pathways. Second one is the chemoreceptor reflex. They are present in the lungs. These receptors are present in the lungs, as the word notes that chemo means chemicals. So they sense the chemicals present in the blood. Due to any reason when the blood pressure decreases, so absolutely due to the low blood pressure or the hypotension, the hypoxia will occur. Hypoxia means low oxygen in the blood. ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाना, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज हाइपोक्सिया. Due to any reason when blood pressure decrease, the hypoxia will occur, and this hypoxia condition will be sensed by the chemoreceptors. hypoxia की जो condition है ये chemoreceptors इसको sense कर लेंगे कि blood के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, and again the message will go towards the medulla. The message will go towards the medulla oblongata from the chemoreceptors. The message will go towards the medulla oblongata part of the brain from the chemoreceptors, and the medulla oblongata, because the blood pressure is low, so the medulla oblongata will decrease the parasympathetic pathway, and it will increase the sympathetic. It will increase the sympathetic pathway and decrease the parasympathetic pathway. जो medulla oblongata है वहाँ से जो sympathetic pathway वो increase हो जाएगी और parasympathetic pathway decrease होगी. And the sympathetic pathway will again cause the vasoconstriction and increase the PR, and the cardiac output will increase, and the heart rate will increase, and due to these all effects absolutely the blood pressure will be increased. So इस तरह से जो in this way the chemoreceptors work, मतलब chemoreceptors जो है वो hypoxia condition या low oxygen condition को sense करेंगे, मैसेज को आगे मेडुला ऑब्लोंगेटा तक भेजेंगे. मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो फिर फर्दर सिंपैथेटिक पाथवे को इंक्रीज करेगा और पैरासिम्पैथेटिक पाथवे को डिक्रीज करेगा,
ताकि वेजो कंस्ट्रक्शन, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाए, वेजो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाए, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, इन सारे फैक्टर से फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। The another regulations are the hormonally mediated regulations that are long regulated, but for the long period of time. There are two major pathways in the hormonal regulations. The first one is the renin-angiotensin aldosterone system, RAAS pathway or RAAS system. The second one is the anti-diuretic hormone or vasopressin pathway. If we look over the both pathways, when due to any reason when the blood water concentration falls, so the blood pressure will be decreased, due to which the message will be sent to the kidneys to normalize the blood pressure, and they will release renin and aldosterone, and this aldosterone will then increase the water reabsorption, and that will increase the blood pressure. Or is it and the same way when blood pressure when blood water level decreases, the message will be sent to the hypothalamus. The hypothalamus will release the vasopressin from the pituitary gland, which will act on the kidneys, and kidneys again there will be increase in the reabsorption. तो जब किसी भी रीजन की वजह से ब्लड प्रेशर जब कम होगा, वाटर कंसंट्रेशन लो होने की वजह से, तो किडनीज जो है वहां से रेनिन रिलीज होगा। रेनिन जो है वो आगे हम ऑनवर्ड वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म इन डिटेल। The renin will increase the aldosterone hormone, and that aldosterone hormone will increase the water and electrolytes reabsorption. Here you can see in the diagram. This is the most important pathway, the RAS pathway or the renin-angiotensin system pathway. First of all, I will explain in Urdu only. यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनीज जो है वो रेनिन को रिलीज करेंगे। किडनीज जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनीज रेनिन को रिलीज करेंगे, और जो एंजियोटेंसिनोजन है ये पहले से ब्लड में प्रेजेंट होगा, और रेनिन क्या करेगा कि वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिनोजन जो कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये इनएक्टिव एंजाइम होगा जो कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, और एंजियोटेंसिन 1 जो है ये खुद भी एक इनएक्टिव की तरह है, इतना प्रॉपर वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एक और एंजाइम जो होते हैं एस एंजाइम्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स उसको कहते हैं। ये एस एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब आगे एंजियोटेंसिन 2 जो है वो दो काम करेगा, एक तो वो खुद वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, एक तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो खुद वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, जिससे ये होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी ये करेगा कि एंजियोटेंसिन 2, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरोन फिर किडनीज में आएगा, और किडनीज में वो फिर सोडियम और वाटर की जो रिटेंशन है या रीअब्जॉर्प्शन उसको इंक्रीज करेगा, जिससे वाटर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, और इससे अगेन जिस तरह प्रीवियस बात में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्लड वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, और जब कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर जो है फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जो एंजियोटेंसिनोजन है ये लिवर जो है वो एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस करती है, लंग्स जो है वो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये लंग्स में प्रोड्यूस होता है। तो और ये दोनों नॉर्मली तौर पर ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। किडनीज ने इस टाइम पे क्या करना होता है कि सिर्फ रेनिन को रिलीज करते हैं। Due to any reason when the blood pressure falls, so the kidneys will release renin. The renin will convert the angiotensinogen into angiotensin 1. The angiotensinogen is basically the inactive form of the, it is inactive itself, and it needs to be converted to the active form for working up. The angiotensinogen is produced by the liver, which is normally present in the blood. So the angiotensinogen will be converted to angiotensin 1 under the effect of renin. Then the ACE enzyme, which is secreted by the and produced in the lungs, the ACE enzyme will convert angiotensin 1 to angiotensin 2, and this angiotensin 2 will do further two works. First, it will do by its own self, by it will do vasoconstriction and increase blood pressure by its own self. And secondly, the angiotensin 2 will increase aldosterone release from the kidneys and from the adrenal gland, and the aldosterone will have effects on the kidneys. The aldosterone will increase the sodium retention or decrease this or increase the sodium reabsorption and water reabsorption, due to which the blood pressure will automatically rise up. So this is the overall
RAAS pathway and renin-angiotensin aldosterone pathway. And this pathway is mostly inactive in the African people because the African don't have the renin enzymes, due to which these medicines or these pathway medicines are also less effective or non-effective in the African peoples. So while prescribing or while studying pharmacology of antihypertensives, you should have this point in your mind. This diagram also explains the renin-angiotensin aldosterone pathway. Due to any reason where the blood pressure falls, so the kidneys will release renin, and the angiotensin which is produced by the liver will be moving in the blood. So the renin will convert the angiotensinogen to angiotensin 1. Due to the ACE enzyme, the angiotensin 1 will be converted to angiotensin 2. The ACE enzyme comes from the lungs, क्योंकि lungs में ये produce होते हैं. The ACE enzymes come from the lungs. Now the angiotensin 2 will have two effects. First effect, it will produce by its own. It will increase vasoconstriction and increase the blood pressure. Blood pressure will be increased. Secondly, angiotensin 2 will increase the release aldosterone from the adrenal gland, and the aldosterone will increase the water and sodium reabsorption inside the kidneys, due to which the blood pressure will be increased. And second pathway is the anti-diuretic hormone or vasopressin pathway. Due to any reason where blood pressure decreases, the hypothalamus in brain will inform the pituitary gland, and pituitary gland will release the ADH hormone or vasopressin hormone or anti-diuretic hormone. Now this ADH hormone will be transported towards the kidneys. These will be transported towards the kidneys, where they will perform two functions. First, it will increase the water and electrolytes reabsorption, and due to this reabsorption the blood pressure will be increased. Secondly, when this reabsorption will be more, so automatically the urine amount will be decreased, due to which the blood pressure will be increased. किसी भी रीजन की वजह से जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की जरिए से एडीएच हार्मोन रिलीज करवाएंगे. एडीएच हार्मोन ब्लड के जरिए से किडनीज में आएंगे. वहां पर ये दो काम करेंगे. एक तो ये वाटर और जो सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और सोडियम को रिअब्जॉर्ब करवाएंगे, दोबारा ब्लड में लाएंगे ताकि वो किडनीज के जरिए से एक्सक्रीट आउट ना हो. जब वो दोबारा ब्लड में आएंगे तो इससे ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा. ब्लड वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा. कार्डियक आउटपुट जब ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा. और जब ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की जब रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो इससे ऑटोमेटिकली जो यूरिन की अमाउंट है वो भी फिर डिक्रीज हो जाएगी. Thank you so much all of you.